सर हाँ, गुड इवनिंग। अगर सर एक्चुअली सर वो आपका बिगिनिंग क्लास का पहला बिगिनिंग क्लास छोड़ के बाकी है तो वीडियो अपलोड नहीं किया सर। ओह, ये अपलोड करने के लिए ना, मैं अपलोड आज कर देता हूँ। यस सर, अपलोड 13 जैन हो गया सर, 18 जैन एंड 20 जैन एंड 24 जैन, 4 या 5 क्लास का लेक्चर वीडियो होगा। अरे सब पीपीटी को अपलोड कर देता हूँ आज। जब एक्चुअली पीपीटी अपलोड कर दी, पीपीटी समझ नहीं आ रहा है जब तक हम लोग लेक्चर वीडियो नहीं देखते हैं। अच्छा, वीडियो वाला को बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं आज अभी जो वीडियो है अपलोड कर देता हूँ, वो दूसरा वाला भी आज फॉरवर्ड कर देता हूँ तुमको। ये सर वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। पीपीटी भी दे दे रहा हूँ आज। देखो, प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे हम, PI3 का इक्वेशन हमको एवेलुएट करना था, ठीक है? तो PI3 जो वैल्यू है ना, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? PI3 का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे हम। PI3 जो फॉर्मूला था उसके लिए AI-1 x Fi-1 प्लस AIX Fi प्लस Bi-1 x F'-i-1 plus Bix Fi. These are the requirements. So just you see, this value was given and this value was given, this value was given to us, this value was given to us. What is Fi-1? This is mentioned here. Fi-1, this is value of Fi-1. This is the value of Fi-1, Fi and Fi plus 1. This is F'-i-1, F'-i and F'-i plus 1. These are the values. Just you now substitute Fi-1, Fi and Fi plus 1. Then this value becomes AI-1 whole into x, which Fi-1, that is value is equal to Fi-1 1 into 1 plus AIX into Fi, that is also 1 plus Bi-1 into x F'-i-1. Now F'-i-1 minus 5
and 1. Minus 5. That means this is the negative value and minus 5, the minus 5 into this value. Minus 5. Next value plus 1 plus b I of x. Now we need to find this value of solution becomes ai minus 1 into x plus of ai into x minus 5 into b I minus 1 into x plus bi of x. We need to calculate this value ai minus 1x, aix, bi minus 1x and bix. And this is the pi3x equation, the polynomial. सर थोड़ा सा नीचे कीजिए. तो Yes, wait for okay, a अगेन बता देंगे. यस सर. हाँ सर एक बार फिर से बोल दीजिए. देखो एक्चुअली ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमारा था ये प्रॉब्लम है. यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ f of x and f dash x. These are the values of f of x and f dash x and x value are there. Estimate the values of f minus 0.5 and f 0.5 using piecewise cubic Hermite interpolation polynomial. Here, three values of x are given and we just naming as xi minus 1, xi and xi plus 1. fx is naming as fi minus 1, fi and fi plus 1. F dash I minus 1, f dash I plus 1. These are the we have named. But our objective is to evaluate f minus 0.5. Minus 0.5 whose values lies in the interval xi and xi plus xi. This in this interval this lies. Minus 0.5 lies in this interval. So we piecewise cubic Hermite interpolating polynomials becomes we can write in the pi3 format. And this formula has already given pi3x is equal to ai minus 1 into x fi minus 1 plus ai into x fi plus bi minus 1 x f dash I minus 1 plus bix f dash I. This one is the polynomials of cubic on a specific interval. But fi minus 1, fi, f dash I minus 1, f dash I are given value here. Already mentioned here fi minus 1, fi, f dash I minus 1, f dash I. These are the values as given. We can substitute this value. Now we substitute here fi minus 1, fi, f dash I minus 1, f dash I. And after this is one value and this is also one value, this is for minus 5 value, this is one value. So we reduce this equation pi3x reduced to ai minus 1x plus aix minus 5 bi minus 1x plus bix. This is the polynomial we reduced. This polynomial is reduced here. Now we need to evaluate this value ai minus 1 into x need to evaluate. So we just given formulas
to us. What is the formula? Now, that is formula is x minus of xi whole square. Hello. Yes, sir. Doubt? No, sir. Okay. Divided by xi minus 1 minus of xi whole square. Bracket stat 1 plus 2 into xi minus 1 minus of x whole divided by xi minus 1 minus of xi. This is the data which represented us, and all the value perhaps we know here. X value minus 0.5. At the point of minus 0.5 we can evaluate it. The minus 0.5, the values of x, and xi value becomes 0. 0 है ना? xi 0. 0 sir. Then we can substitute here xi is equal to 0. So 0 minus 0 whole square divided by xi minus 1, that is minus 1, minus xi, that is minus 0 whole square. Whole bracket 1 plus 2 into 1 plus 2 into. So we can substitute the value, or we can write down, if that is x, you have not put the value x, only you write down x, this value, not x 0.5. You can put only x, that is x square, x minus 0 square. 2 into xi minus 1, that is minus 1 minus x whole divided by xi minus 1 minus 1 and minus 0. And this value becomes x square whole bracket 1 plus 2 into 1 plus x. And finally, I write down 1 plus 2 into 1 plus x bracket finished into x square. That is the AIX, AI minus 1x. Are you clear, everyone? Then we next come to calculate the value AIX. The formula of AIX has already given, and just now to put x minus xi minus 1 whole square whole divided by xi minus 1 minus xi whole square whole bracket 1 plus 2 into x minus of xi divided by xi minus 1 minus of xi. This bracket finished. And just we can put xi minus 1, that is the minus 1, that is x plus 1 whole square, minus 1 and minus 0, that is 1. Two into x minus xi means only for x,
and xi minus 1 minus 0, that is minus 1. Now the value becomes 1 plus of 2x, 1 plus 2x whole into x plus 1 whole square. And this is the AIX. वो -2x होगा कि 2x होगा क्योंकि -1 डिवाइड था ना. Right, ठीक 1 minus 2x होगा, right? हाँ, 1 minus 2x होगा. This is 1 minus 2x. One minus 2x. So AI minus 1x and AIX has completed, then BI minus 1x and BIX. BI minus 1x. BI minus 1x. X minus XI minus 1 whole into x minus xi whole square whole divided by xi minus 1 minus of xi square. Now all the values we can need to put here. X minus of 1, that is x plus 1. X minus 0, that is x square. And minus 1 minus 0 square, that is 1. And finally we write down here x plus 1 into of x square. That is BIX. BI minus 1x, which is equal to x square into x plus 1. This is the value. Then BIX we need to find again. BIX. What is the BIX formula? X minus of xi. into Hello. yes sir. कुछ doubt? No sir. Okay. X minus of xi minus 1 whole square divided by xi minus 1 minus of xi whole square. Input values here. X minus 0 into x plus 1 whole square divided by 1, and that is also x into x plus 1 whole square. And BIX value becomes x whole into x plus 1 whole square. This is the value. Now all the value we substitute in this equation. What is the PI3 equation by cubic polynomial? Now AIX plus AIX. Now the PI3 equation becomes PI3 of polynomial AI minus 1x. And that value becomes 1 plus 2 into
1 plus 2 into 1 plus x whole into x square. So just we have write down 1 plus 2 whole into x plus 1 whole bracket whole into x square plus aix, and aix value becomes 1 minus 2x into x plus 1 whole square into x plus 1 whole square. 1 minus 2x (1 minus 2x) whole into x plus 1 whole square plus bi minus 1x minus 5. This is minus 5 x plus 1 into x square plus x into x plus 1 whole square Then we can simplify all the equations, and finally we found here minus 4x cube plus 3x square minus of x minus of 1 whole square. That is pi3x we need to evaluate here, and that is the cubic polynomial. Then f minus 0.5 value becomes pi comma 3 of minus 0.5, and that value becomes 4 into minus 0.5 cube plus 3 into minus 0.5 square minus 0.5 minus of 1, and whose value becomes 0.25. So the value of pi3 at the point of 0.5 minus 0.5, that value becomes 0.25. Similarly, another point also given here. Just to see, if you have any doubt, then you can ask now. सर वो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखे हैं जो, हाँ, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.062 0.06. हाँ ये सर वही आ रहा था माइनस 5 आ रहा है सर। तो वो और होल स्क्वायर ये- होगा ना उसका। हाँ 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 हाँ। तो कितना आ गया बोलो? ओ यहाँ पे स्क्वायर है, कितना 0.5 मिला? 0.5 0.5. अच्छा, सिमिलरली x इज इक्वल टू 0.5 है हमारा। जो यहाँ पे और एक पॉइंट रीजन हम कैलकुलेशन करते थे, किसका है ना, इस क्वेश्चन में एक माइनस 0.0625 आ रहा है सर। 0.0625. ये सर वही आ रहा है सर 0.0625 आ रहा है। ओके, तो 0.0625 लिख दीजिए। 0.0625। सिमिलरली हम x इज इक्वल टू 0.5 लेकर सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस x का वैल्यू 0.5 कंसीडर करना होगा।
इसका इंटरवल भी आ जाएगा xi एंड xi प्लस 1 के बीच में आ जाएगा। देखो ये वैल्यू ये दोनों के बीच में आ जाएगा 0.5। The similar process we have to adopt and evaluate this equation। ये जैसे प्रोसेस में किए हैं उसी प्रोसेस में हम कंटिन्यू करेंगे तो पॉलिनोमियल भी आ जाएगा यहाँ पे। Similarly we continue this process। डाउट है सर पहला केस में सर। हाँ पहला केस जिसी प्रोसेस में किए हैं और एक पहला मिनट, केस में तो डाउट है। पावर 2 कहाँ है? इसका सिंपलीफाई वैल्यू कितना आता है तुम्हारा देखो तो। x टू द पावर 3 का स्क्वायर करते तो लंबा जाएगा ना सर, उतना हाँ तो हाँ आना नहीं चाहिए। ये नहीं आएगा। अच्छा पावर ठीक 2 है कहाँ से आ जाएगा? सिंपलीफाई कर देते एडिशन है सर यहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर 3 आना चाहिए ना सर। तो ये नहीं होगा बराबर। इसको कैंसिल कर दीजिए तो देखते हैं। ये नहीं होगा राइट, ठीक बोले तुम, ये नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा। अच्छा ओनली दैट वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आ रहा है सर। 0.5 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं तो कितना आता है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x मीन्स 2x क्यूब। तो उसको स्क्वायर निकाल लेंगे तो 0.25 ही आ रहा है। 0.25 आएगा। अच्छा और इक्वेशन को हम सिंपलीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर राइट है। इसका सिंप्लीफिकेशन वैल्यू, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन में इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अच्छा नहीं डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए तो क्या प्रॉब्लम है, देखिए डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, नहीं तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आना चाहिए। ओके डायरेक्ट पुट करने से कितना आता है देखो तो, यहाँ पे डायरेक्ट 0.5 डाल दीजिए, माइनस 0.5 डाल दीजिए दोनों में, x के जगह में कितना आता है देखो। हो गया 0.5 0.5 तो ही ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा ये 0.5 आएगा। For the case of second case, similarly we use the exponent 0.5 for this case, then the quadratic equation pi3x whose value becomes 4x cube minus 3x square plus x plus 1 आएगा, एंड दैट वैल्यू हम 0.5 डाल देंगे तो वैल्यू एक आएगा
4 into 0.5 q minus 3 into 0.5 square plus 0.5 plus 1. And that value becomes 1.25. ये वैल्यू आ जाएगा. Then we come to spline interpolation. Spline interpolation now we come to discuss. Spline interpolation. When computers were not available, the draftsman used a service device to draw a smooth curve through a given set of points such that the slope and curvature are also continuous along the curve. That is, f of x, f dash x, f double dash x are continuous on the curve. Such a device is called the spline or plotting of the curve, was called spline fitting. So actually, spline interpolation क्या है? Now, when the computers were not available, the draftsman used a device to draw a smooth curve through a given set of points such that the slope and curvature are also continuous along the curve. That is, fx, f dash x, f double dash x are continuous on the curve, are continuous on the curve. And this curve called spline, and plotting the curves was called spline fitting. And the given interval we consider on the closed interval of AB in that is calculated on this interval. The given interval, what is the given interval? And that is on AB is subdivided into subintervals and subdivided it. Divided into n subintervals. N subintervals. N subdivided into n subintervals. And that is x0, x1, x1, x2, x2, x3, and so on. That is xn minus 1 and xn in this interval. For a, that is, we can say that a is equal to x0. And just line less than x1, less than x2, less than x3, and so on, less than xn, which is equal to b. This is the intervals or nodes, called nodes. These are the nodes.
these points, all these points are as well as the nodes of this point. Then we define a spline function. What is the spline function actually? The spline function having degree n with nodes or nodes, just we can represent xi, x1, x2, x3, etc. are the nodes of the function. We satisfy the following properties. spline definition क्या होगा? Spline function spline satisfies the following properties. Satisfies all nodes xi I is equal to 1, 2, dot, 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 of the functions. First condition, f of xi, which is equal to function of xi, where I is equal to 0, 1, 2, etc. On each sub-interval, सही डाउट है सर. बोलो. हेलो सर, अभी जो पहला फंक्शन लिए हैं f of xi इक्वल टू स्मॉल f of xi I इक्वल टू 0, 1, 2, और जो डेफिनेशन में लिखा है I का वैल्यू 0 नहीं लिए सर. I is equal to 0, 1, 2. तो जो I का वैल्यू 0 नहीं लेना. यहाँ पे 0 एक रहेगा, 1 etc. ओके डाउट क्लियर है सर. ओके, तुम्हारा और 1 मिनट लेस हो गया है, तो हम ये क्लास नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना? रिव्यू करेंगे उसको, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? लाइन इंटरपोलेशन का नेक्स्ट क्लास करेंगे, बिकॉज ये तो खत्म हो गया जूम में. क्लास का रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज देना. हाँ, अभी भेज देता हूँ, ये तो अभी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ.